Praise the Lord. I'm going to sing. Sing them over again to me. Wonderful words of life. Let me more of the beauty see. Wonderful words of life. Words of life and beauty. Teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Hello everyone, praise the Lord. What a beautiful song is this, beautiful words, wonderful words of life. We need to speak wonderful words towards each other. We need to build the confidence of each other. Today we are going to talk about a topic called the taming of the tongue. आज हम लोग बात करेंगे कैसे हम अपनी ज़ुबान को काबू में रख सकते हैं. I'm going to start with a short story. It is about frogs. ये story जो है frogs के बारे में, मेंढक के बारे में. Once upon a time there were a few frogs and they were going for a walk. कुछ frogs होते हैं, मेंढक होते हैं, वो walk पे जाते हैं. Now one of the frog was there, his foot slipped and he fell into a pit. उनमें से एक फ्रॉग होता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो गड्ढे में गिर जाता है. The other frogs they start shouting. बाकी ये फ्रॉग्स चिल्लाते हैं. वो कहते हैं अब तो ये मर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी, ये बाहर कैसे आएगा. Now the frog that was inside the pit, he starts jumping. वो जो बाकी फ्रॉग्स को देखता है कि वो अंदर झांक रहे हैं, वो उछल रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, तो जो पिट के अंदर जो फ्रॉग होता है वो जंप करने लग जाता है. He starts jumping and he tries to come out. और वो ऐसे ट्राई करते करते बाहर आ जाता है. Then he thanked all the other frogs. वो बाकी फ्रॉग्स को थैंक यू कहता है. वो कहता है थैंक यू सो मच फॉर encouraging me. I saw you all jumping, shouting. I got encouraged and I tried. I came out. वो कहता है आप लोगों ने मुझे encourage करा, इतना जंप करा, शाउट किया, मैं encourage हो गया, मैं बाहर आ गया. The other frogs were surprised. वो कहते हैं हमने तो encourage करा ही नहीं. वो कहते हैं हम तो रो रहे थे. वो कहते हैं हम तो सोच रहे थे ये मर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी. How did he come out? This happened why? Because the frog was a deaf frog. क्योंकि जो फ्रॉग जो था वो डेफ था, उसको सुनाई नहीं देता था. उसको लगा बाकी फ्रॉग्स उसको encourage कर रहे हैं, जबकि बाकी फ्रॉग्स रो रहे थे. Yes, my dear friends, what is the moral of the story? The moral of the story is that our words have got power. If we try to speak abusive words to a person who is already down, then we are hurting his morale. अगर हम किसी पर्सन को अब्यूज करते हैं जो ऑलरेडी बहुत दुखी है, उदास है, तो हम उसका कॉन्फिडेंस कम करते हैं. And if we are trying to encourage a person who is down in spirit, then we are boosting his confidence. अगर एक इंसान है जो उदास है, दुखी है, परेशान है, अगर हम उसको encouraging words बोलते हैं, तो हम उसका कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं. So our words has got the power to break a person or to build up a person. The Bible says that man has been able to control everything. We live in a world of science and technology. We live in a techno-savvy world. Man has reached even moon, and man is planning to reach even sun also. इंसान जो है वो सन तक पहुंचना चाहता है. We live in a world of gadgets. We have learned how to control gadgets. The Bible says that man knows how to even control animals. The Bible says in the book of James chapter 3 verse 3 and 4, it says that we know how to control a horse with the help of a bit. अगर हम हॉर्स को लगाम लगाते हैं तो उसको भी हम टर्न कर सकते हैं. Bible says we can even turn a ship with the help of a rudder. No matter how much the wind is blowing in the opposite direction, चाहे कितना भी हवा opposite direction में क्यों नहीं जाती, लेकिन हम एक शिप को भी टर्न कर सकते हैं. We can turn big ships with the help of a rudder. Bible says that man has been able to, tame ferocious animals like lion, tigers, panthers, snakes. अगर हम सर्कस में देखें तो वहाँ पे कैसे लोग ट्रेन करते हैं lions को, tigers को, panthers को, even snakes को. Bible says that we have learned to tame all animals. Man can even control animals. We even know how to control our dogs. We teach manners to our dogs. हम अपने डॉग्स को सिखाते हैं कैसे गेस्ट के आगे बैठना है, कैसे उठना है, how to sit in front of guest, how to eat, how to go out, how to come in. We even teach manners to our dogs. But what happens when it comes to our tongue? लेकिन जब बात हमारी टंग की होती है तब क्या हो जाता है? The Bible says in the book of James chapter 3 verse 6 that our tongue is set on fire. Here the Bible says that like a small spark can turn the whole forest into a fire. जैसे छोटी सी चिंगारी पूरे फॉरेस्ट में आग लगा देती है. Similarly, our tongue is also set on fire. हमारी जो टंग है वो भी हमेशा एक फायर की तरह है, उसमें भी हमेशा आग लगी रहती है. Bible says our tongue is full of evil. It can even corrupt the whole body.
The Bible says no matter how much generous we are, no matter how much helpful we are, no matter how much kind-hearted, generous, helpful we are, but if we have a bad tone, our body is corrupt. We are full of sin. Bible is comparing our tongues with the fire of hell. Our tongue is as dangerous as the fire of hell. It can set the whole life on fire. यानी हमारी जो टंग है वो किसी इंसान की जिंदगी में आग लगा सकती है, किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है. How powerful and how dangerous our tongue is, the Bible says. Then the Bible says in the book of James chapter 3 verse 8 that a tongue is a restless evil. Our tongue is a restless evil, it is full of deadly poison. यानी बाइबल जो है हमारी टंग को एक पॉइजन से कंपेयर करती है. जैसे पॉइजन होता है, जहरीला होता है, वैसे हमारी टंग भी जहरीली है. इट इज ऑलवेज रेस्टलेस, द बाइबल सेज. वी आर रेडी टू टेक रिवेंज. यू नो, सामने वाला अगर एक बात सुनाते हैं उसको 10 सुना देते हैं. दैट्स व्हाई द बाइबल सेज आवर टंग इज ऑलवेज एक्टिव. इट इज रेस्टलेस. इट नोज हाउ टू टेक रिवेंज. इट इज ऑल द टाइम रेडी टू टेक रिवेंज. Bible says in the book of James chapter 3 verse 9 and 10 that with the same tongue we praise God and with the same tongue we curse men. यानी एक ही ज़बान से हम प्रेयर करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, we praise God, we sing hymns, and with the same tongue we curse men. Only one thing can happen, Bible says, that either we should learn to praise God or we should learn to curse men. Bible goes on to say in James chapter 3 verse 11 that a spring, it cannot give two kinds of water. A spring cannot give fresh water and salty water. जिस तरह से एक स्प्रिंग होता है उसमें से एक ही तरह का पानी आता है. Similarly, our tongues, you know, it should be having a similar attitude. We cannot praise God and curse men at the same time. We cannot carry a dual attitude. We cannot have double standards. Either we should praise God or either we should curse men. We should not have a dual attitude, Bible says. Then in the book of Proverbs chapter 21 verse 23, it says that whosoever learns to keep his tongue in control keeps himself out of trouble. कि अगर हमने अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना सीख लिया है तो हम अपने आप को बहुत सारे ट्रबल से बचाते हैं. If we know how to control our tongues, God protects us from every kind of troubles. We do not land up in troubles once we learn how to control our tongues. Then the Bible says in the book of Proverbs chapter 15 verse 1, soft reply turns wrath. यानी हम अगर किसी को सॉफ्टली रिप्लाई करते हैं तो सामने वाले का गुस्सा ठंडा कर देते हैं. अगर सामने वाला हमसे लड़ रहा है और हम उसको सॉफ्टली रिप्लाई करते हैं तो एकदम से वो कूल डाउन हो जाता है. You know, by replying softly, we simply, you know, cool down the person. And the Bible says that harsh reply stirs up the quarrel. अगर सामने वाला भी लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं, तो क्या होता है? एक बहुत बड़ा quarrel हो जाता है. So it depends on us that whether we can end a quarrel or we can start a quarrel. If we are replying softly, we are ending the quarrel. And if we are replying harshly, then we are stirring a quarrel. We are starting a quarrel. So it all depends on our words. Then the Bible says in the book of James chapter 1 verse 26, if we think we are very religious, very spiritual, and if we cannot control our tongues, we are deceiving ourselves. अगर हम सोचते हैं बहुत धार्मिक हैं, हम बहुत प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, we are very spiritual, लेकिन हमारी ज़बान पे काबू नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं. If we want to be a really spiritual person, we need to control our tongues. We need to display a good attitude. Proverbs chapter 12 verse 18 says, harsh words are like a sword. यानी जो हार्श वर्ड्स होते हैं, जो गंदी ज़बान होती है, वो स्वॉर्ड का काम करती है. इट pierces the soul of the other person. If we are using harsh words, we are simply piercing the soul of the other person. We are simply killing the soul. And the Bible says that a wise tongue brings healing. यानी सामने वाला पर्सन अगर दुखी है, उदास है, अगर हम उससे वाइजली बात करते हैं, if we are talking softly to a person, we are simply bringing healing to the soul of the other person. Imagine what power our tongues hold. Then the Bible says in the Proverbs chapter 17 verse 28, if a fool is silent, he appears to be wise. यानी कि एक इंसान कितना भी फूल है, अगर उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर उसको शांत रहना आता है, तो he also looks like a wise person. He appears to be a wise person. No matter how fool a person is, if he doesn't have any knowledge, but if he is silent, he keeps silent, he looks like a wise man. He appears to be wise. In 1 Peter chapter 3 verse 10, it says that if you want to see good days in your life, you must learn to keep your tongue from evil. अगर हम चाहते हैं कि God हमें blessings दे, if you want abundant blessings from God, we must learn to control our tongues. If you want to receive abundant blessings, then if God will see our polite behavior, He is going to bless us accordingly. Titus chapter 3 verse 2 says, avoid quarrel, be gentle, show courtesy towards each other. यानी टाइटस की बुक हमें सिखाती है कि we must learn to be gentle, to be polite, to be courteous with people.
वी मस्ट लर्न टू बी सॉफ्ट विद पीपल. हमें लोगों से सॉफ्टली बात करना है, उनसे जेंटली बात करना है, उनसे पोलाइटली बात करना है. Then in Proverbs chapter 18 verse 21 says, our words have got the power of life and death. यानी हमारे वर्ड्स जो हैं वो एक इंसान को मतलब किल भी कर सकते हैं और एक इंसान को बिल्डअप भी कर सकते हैं. We need to reflect on our lives. Are we speaking death into the life of another person? Or are we speaking life into the life of another person? Are we speaking the words of death? Are we speaking harsh words that are killing the soul of the other person? Are we simply trying to kill the confidence of the other person by speaking the death words to other person? हमें सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं हम किसी इंसान का कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हैं, किसी की सोल को, किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचा रहे हैं उसको बार बार हार्श वर्ड्स बोल के. और आर वी स्पीकिंग लाइफ इनटू द अदर पर्सन? या फिर हम दूसरे इंसान को अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, ब्यूटीफुल वर्ड्स बोलते हैं, कॉन्फिडेंस वाले वर्ड्स बोलते हैं, उसको हम बूस्ट अप करते हैं, उसका कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं. We need to reflect on all this. In the last, I would like to say, in the book of Ephesians, chapter 4, verse 29, it says that let no corrupt talk come out of your mouth, but what is required to build each other. यानी हमें अपने माउथ पे कंट्रोल करना है, अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना है, ताकि हमारे मुंह से कोई करप्ट बात ना निकले, बल्कि हमारे मुंह से ऐसी बातें निकले ताकि हम दूसरों को कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें, so that we are able to build each other. Now, my humble prayer for all of you is that may God bless each one of us. May God help us to have patience, to have tolerance towards each other. May God help each one of us to build each other, not to break each other, but to build up each other, to build up the confidence of each other, to be polite, to be courteous towards each other, so that we can speak the words of life to each other. I hope you are blessed by listening to this message. Stay blessed. Take care. God bless you. Bye-bye.